हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे जो कि फिग्मा कन्वर्ट से होगी। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक फिग्मा कन्वर्ट इनटू वर्डप्रेस। सो विदाउट स्किपिंग एनीथिंग हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और वाइल यूजिंग एलिमेंटर पेज बिल्डर हम इसको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे। सो लेट्स जंप इनटू कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे पास फिग्मा है जिसको हम वर्डप्रेस के ऊपर बनाने जा रहे हैं। फिग्मा की बात करें तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा हेडर है जिसमें मतलब इट्स नॉट अ नॉर्मल हेडर जो कि एक कस्टम हेडर है। विद दैट सेट एक अच्छा सा हमारे पास हीरो सेक्शन है। देन अबाउट अस का सेक्शन आ जाता है, सर्विसेज लिस्टेड हैं, प्रोसेस और वाई चूजर्स। देन हमारे पास टेस्टिमोनियल्स का ये कैजुअल आ जाता है। और देन एंड पे सी टी ए बटन, सी टी ए हमारे पास लीड्स के लिए। और एंड के ऊपर एक अच्छा सा हमारे पास फुटर है जिसको हम वर्डप्रेस के ऊपर बनाने वाले हैं। तो हम यूज़ करेंगे एक फ्रेश सा वर्डप्रेस। तो मेरे एक सब डोमेन के ऊपर फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल पड़ा हुआ है, तो हम उसको इस डिज़ाइन को यहीं बनाना स्टार्ट करेंगे। तो लेट मी जस्ट क्लीन इट अप, और ताकि हम डिज़ाइनिंग और पेजेस के लिए जो जगह है ना वो कर लें। विद दैट सेट हम स्टार्ट करते हैं इसको। फॉर दैट हम हेलो एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे होंगे इसमें। और जो भी कस्टम वेबसाइट्स हैं जो कि आपने कस्टम डिज़ाइन करनी है, ये रिकमेंडेड चीज़ है कि आप हेलो एलिमेंटर थीम इस्तेमाल करें, बिकॉज इट्स वेरी लाइट, कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लेके आता और बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है वर्डप्रेस के लिए। तो ये दो प्लगइन इस्तेमाल करेंगे। विद दैट सेट हमारी कोई आइकन्स वगैरह इस्तेमाल होंगे, तो उसके लिए सेफ एस वी जी नाम से एक प्लगइन हम हमने इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो ये भी हमारे काम आएगा। दैट्स इट। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं होम पेज जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ। पब्लिश एंड देन एडिट विद एलिमेंट। अच्छा, मेरे पास सारा कुछ यहाँ पे आ चुका हुआ है। जो भी मीडिया फाइल्स हम इस वेबसाइट के ऊपर यूज़ करने जा रहे हैं, सारे कुछ डाउनलोड हो चुका हुआ है। जो एस वी जीज फाइल है, आइकन्स फाइल, हर चीज़ आ चुका है। विद दैट सेट इसमें जो फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो भी वर्डप्रेस, हमें वर्डप्रेस में मिल जाएंगे, कोई कस्टम फॉन्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और हम इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करके, जैसे कि ग्लोबल स्टाइलिंग, ग्लोबल कलरिंग स्कीम, फॉन्ट्स, ग्लोबल ऑल दोज थिंग्स, तो इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करके हम इस साइट को बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सो let me just create one container for this, just one container। मैं हाइट इसकी कर देता हूँ 100 VH साथ में। ओके, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया लाइब्रेरी अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास मीडिया सारा अपलोड हो चुका है। तो हम जाकर जस्ट लोड दिस, और अब ये आ जाना चाहिए मीडिया में। ओके, तो हीरो सेक्शन इमेज हम लगा देते हैं, और पोजीशन सेंटर सेंटर, रिपीट नो रिपीट, और यहाँ पे कवर। और आई थिंक होम पेज अभी अभी के लिए इतना बहुत है।
उसकी वजह ये है, मैंने होम पेज सिर्फ इतना ही क्यों बनाया है, उसकी वजह ये है कि हमारा हेडर इस तरह कुछ इस तरह से है कि हमें ये ब्लॉग बनाने के लिए नेगेटिव मार्जिन ऊपर भी ऐड करनी होगी और नीचे भी ऐड करनी होगी, ताकि हमारा नीचे से जो सेक्शन है वो ऊपर की तरफ आ जाए। तो अ, इसलिए एक सेक्शन बना दिया गया ताकि हेडर फुटर जब रेडी हो तो वो एक मुकम्मल काम हो गया और देन हम पूरे पेज के ऊपर फोकस कर सकें। तो दैट द थिंग, मैं क्विकली इसको बंद करता हूँ और हम हेडर फुटर की तरफ फोकस करते हैं। हम जस्ट क्रिएट द हेडर। अच्छा, ये हेडर फुटर और कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे अगर आप एलिमेंटर सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सब के लिए आपको एलिमेंटर प्रो यूज़ करना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे एक हेडर क्रिएट करते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर आ जाएगा। हेडर में हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। और इस हेडर को बनाने के लिए दो कंटेनर, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप बार और सेकेंडली हमारे पास मेन मेन मेन्यू, जो कि हेडर फुट मेन मेन्यू हमारे पास, जिसमें लोगो मेन्यू और बटन आ जाएगा। तो उसके लिए आई थिंक सो कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंटर सेटिंग के ऊपर चले जाना चाहिए, जिसमें हम ग्लोबल कलरिंग स्कीम को देख रहे होंगे। तो ये बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि हम ग्लोबल कलरिंग स्कीम इस्तेमाल करें अपने हर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो मेन जो मेन जो काम होता है वो वेबसाइट को बनाने का, तो मेनली जो काम होता है वेबसाइट को बनाने का, वो ये नहीं कि सिर्फ साइट हो, बल्कि वो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रही हो, जिसमें ग्लोबल कलरिंग स्कीम होती है, ग्लोबल स्टाइलिंग होती है, हर चीज़ ग्लोबली अटैच हो रही होती है। और जब एक दफ़ा आप इस पे टाइम इन्वेस्ट करके एक दफ़ा चीज़ें एडजस्ट कर दें तो बाकी की साइट बहुत ही फास्टली डिज़ाइन हो जाती है। तो मैं तो लेट मी जस्ट एट द कलरिंग स्कीम, ग्लोबल कलरिंग स्कीम, हमारा प्राइमरी कलर आ गया नेवी ब्लू कलर, और सेकेंडरी आई थिंक हमें हेडिंग का जो कलर है वो ठीक है। टेक्स्ट कलर मैं इस यहाँ पे ग्रे ऐड कर देता हूँ। और एक्सेंट, आई थिंक हमारे पास एक वाइट एक्सेंट करके कलर है जी। तो वाइट एक्सेंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास एक लाइट ग्रे कलर करके कलर होगा। ओके, तो कस्टम कलर्स, लाइट ग्रे, देन एक कलर हम वाइट ऐड कर देते हैं और एक ट्रांसपेरेंट कलर ऐड हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हमें ट्रांसपेरेंट कलर्स चाहिए होते हैं। बैक काफ़ी दफ़ा बैकग्राउंड कलर्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, या फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास जो ग्लोबल कलरिंग स्कीम है वो आ चुकी है। फॉर नाउ आई थिंक यही चीज़ें हैं जो कि हमारे पास हैं। वाइल बिल्डिंग वेबसाइट अगर कोई और कलर हमारे पास आया तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फॉर नाउ हम मूव करते हैं ग्लोबल फॉन्ट्स की तरफ। और ग्लोबल फॉन्ट्स जो हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, लेट्स से हेडिंग के ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा डीएम सेंस करके। और देन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ पैराग्राफ के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, तो फिर डीएम सेंस, एंड देन बटन के ऊपर, मतलब पूरी साइट के ऊपर डीएम सेंस करके हो रहे हैं। और आई चेक दैट के ये वर्डप्रेस लाइब्रेरी में मौजूद है, वर्डप्रेस फॉन्ट्स में। तो मैं जस्ट इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो हमारे पास कलरिंग स्कीम आ गई और शो कलरिंग स्लो ग्लोबल सेटिंग, ओके दैट्स फाइन। देन हम मूव करते हैं टाइपोग्राफी के ऊपर। और यहाँ पे
हम टाइपोग्राफी वगैरह सेट करेंगे, जैसे कि हमारी बॉडी टेक्स्ट का टेक्स्ट जो है वो 16 पिक्सल होना चाहिए। और कलर आई थिंक दैट डजंट मैटर। और यहाँ पे लिंक का जो कलर है वो नेवी ब्लू आई थिंक। समटाइम क्या होता है कि पैराग्राफ्स और बॉडी टेक्स्ट के अंदर एक लिंक ऐड हो जाता है, तो उसमें लिंक का कलर क्या होगा, तो आई थिंक प्राइमरी कलर इज बेस्ट। सो लिंक के ऊपर कोई होवर भी करे तो नो प्रॉब्लम। विद दैट सेड H1 का हम ऐड करेंगे। H1 हमारे पास फिग्मा के ऊपर जो H1 है उसकी टाइपोग्राफी साइज, फॉन्ट साइज 64 और लाइन हाइट 72। और फॉन्ट वेट हमारे पास 400 है, तो हम 64 डीएम सेंस वेट 400 एंड लाइन हाइट 72। ओके। सेकेंडली डीएम सेंस font size 48, font weight 400 और line height I think so 60। H3 DM Sans font, और हमारे पास जो font size आ जाता है वो 32, almost 32 I think so, yes 32। और 44 के करीब line height, and then we'll move on H4 DM Sans 24, 24 font size, font weight 400 और जो लाइन हाइट आई थिंक हमें मिल जाए, ओके 36 लाइन हाइट। एंड देन DM Sans 22, font weight 400 and line height 30। So that's it for this। अच्छा, यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो कि हमें रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत हेल्प करता है। अब इसमें जो हमने 64 फॉन्ट साइज सेट किया है वो डेस्कटॉप के लिए है, लेकिन व्हाट अबाउट अगर हम रिस्पॉन्सिवनेस पे जाएं तो अगेन यहाँ पे 64 ही शो करेगा अनटिल के हम पूरी साइड के ऊपर जो H1 हम यूज़ कर रहे हैं या फिर H2 यूज़ कर रहे हैं उसके फॉन्ट साइज नहीं बदल देते उस अकॉर्डिंगली के डेफिनेटली 64 फॉन्ट साइज मोबाइल पे अच्छा नहीं लगेगा, तो डेफिनेटली हमें उसको डिक्रीज करना है वो सारी चीज़ें। तो ग्लोबल कलरिंग स्कीम, ग्लोबल स्टाइलिंग का फ़ायदा ये होता है कि एक ही दफ़ा आपने एलिमेंटर के बैकएंड के ऊपर एक सेकंड सेटिंग कर दी कि इसकी कलरिंग स्कीम ये रख दें, मोबाइल के ऊपर ये रख दें और आपने टैबलेट के ऊपर ये रखनी है, तो हर चीज़ आप वहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास H1 का फ़ॉन्ट साइज 64 है, तो फॉर मोबाइल आई एम गोइंग टू सेट इट टू 38, राइट? और फॉर H2 आई एम गोइंग टू सेट इट 32 और फॉर H3 हम हम इसको सेट कर देते हैं 26, then H4 22, H5 20, so 20। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमें सेट करने की ज़रूरत है वो है लाइन हाइट। तो 64 पिक्सल के हवाले से हमने 72 लाइन हाइट रखी थी, तो 38 पिक्सल फॉन्ट साइज के हवाले से हम 45 लाइन हाइट रखेंगे। और H2 32 आई थिंक 42, 40 इज बेस्ट।
ओके, हमारे पास 26h3 है, तो इनको हम 36 लाइन हाइट, एंड फॉर द H4 हम इसको सेट करेंगे 32 लाइन हाइट, for H5 I think it's 27, right? So it will automatically set all those things. नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आ जाते हैं बटन्स। बटन की टाइपोग्राफी 16। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ फिग्मा के ऊपर, क्योंकि हमने पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइन बनाना होता है फिग्मा डिज़ाइन करने का मकसद ये है। तो 16 फॉन्ट साइज, हमारे पास वेट है 500 यानी मीडियम, और जो बॉडी टेक्स्ट यूज़ कर रहा है लाइन हाइट 24, तो वो ठीक है। तो फिर इसको करते हैं 16, देन DM सेंस, और वेट हमारे पास 500 आ जाता है, 24 लाइन हाइट। टेक्स्ट कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर नेवी ब्लू, और बॉर्डर रेडियस 8, एंड पैडिंग हमारे पास 14 एंड 30। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। मुझे होवर भी आई थिंक सेट कर लेना चाहिए, तो टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर नेवी ब्लू, और दैट्स गुड फॉर इमेजेस। ओके, हम सेटिंग कर सकते हैं, हम फॉर्म की भी इसी तरह ही सेटिंग कर सकते हैं। आई थिंक हमें कर लेनी चाहिए फॉर्म की भी इस तरह सेटिंग। तो हम क्या करते हैं कि फॉर्म की जो फील्ड कलर है ना वो है ग्रे, तो हम यहाँ से ग्रे टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम 16 पिक्सल सेलेक्ट करते हैं, 16 पिक्सल, राइट। और DM सेंस है, DM सेंस विद दैट सेट 400, और ओके, नहीं नहीं, ये लेबल है, ये लेबल की स्टाइलिंग है। तो लेबल हम फॉर्म में कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो इसका कोई मसला नहीं है। फील्ड के अंदर हम DM सेंस 16, 16 पिक्सल, 400, और 24 लाइन हाइट, देन टेक्स्ट कलर हमारे पास, टेक्स्ट का कलर आ जाता है ग्रे। एक्सेंट कलर, आई थिंक दैट्स नॉट द थिंग। बैक फील्ड का बैकग्राउंड कलर हमारे पास वाइट एक्सेंट है, तो हम वाइट एक्सेंट फील्ड का बैकग्राउंड कलर, हमारे पास बॉर्डर है उसका 1 पिक्सल का बॉर्डर हम ऐड करेंगे, और फॉर द बॉर्डर हमारे पास लाइट ग्रे कलर में बॉर्डर है, तो लाइट ग्रे कलर फॉर बॉर्डर, और आई थिंक 8 पिक्सल हमारे पास बॉर्डर रेडियस है, यस 8 पिक्सल। एंड फॉर पैडिंग 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल हमारे पास पैडिंग है फॉर ऑल साइड्स। ओके, सो टेक्स्ट कलर वही, और बैकग्राउंड कलर, बिकॉज इसमें दो चीज़ें लग रही होती हैं, एक तो नॉर्मल स्टाइलिंग और देन फोकस। जैसे कोई कोई यूज़र फॉर्म के ऊपर क्लिक करे तो इसे कहा जाता है फोकस, तो ऑटोमेटिकली एलिमेंटर फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता है, तो हमें फोकस का कलर भी एग्जैक्ट सेम रखना होगा। आई थिंक वाइट एक्सेंट हमने इस्तेमाल किया था, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन। हम आगे जाते हैं, और फॉर साइट आइडेंटिटी लोगो ऐड करते हैं हम अपना एल सर्विसेज, देन यहाँ पे फेव आइकन आ जाएगा,
I'm good with that. Layout, yeah, this is very important. तो फॉर ईच कंटेनर हम वेबसाइट पे अपनी ऐड करते हैं, उसका उसको यहाँ से सेट किया जा सकता है उसके विड्थ को, राइट? तो लेट्स से मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि हमारे कंटेनर की क्या विड्थ होगी। तो ओके, तो ये लेयर है जो कि सारी साइट के ऊपर एग्जैक्टली सेम है, इस लेयर को फॉलो कर रही है। तो इसकी विड्थ जो है हमारे पास 1240 आ चुकी है, 1240 पिक्सल। लेकिन अगर हम इस विड्थ की बात करें तो ये 1340 है, तो हमें समझ लग गई कि जो पूरी साइट के ऊपर विड्थ इस्तेमाल हो रही है वो 1240 पिक्सल है, लेकिन जो ये ब्लॉक का है ना वो 1340 है। तो हम पूरी साइट में जो मोस्टली इस्तेमाल हो रही है उसके साथ जाएंगे 1240 पिक्सल। और फॉर कंटेनर पैडिंग मैं इसको ज़ीरो करने वाला हूँ, क्योंकि हर कंटेनर के ऊपर हर कंटेनर के ऊपर जो भी कंटेनर हम ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली 10 या 15 पिक्सल ऐड हो जाती है पैडिंग। तो मैं इसको ज़ीरो रखता हूँ। और वन मोर इम्पॉर्टेंट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट एलिमेंटर फुल वेट सेट कर दिया, और ये हमारे बैक में सॉरी। और देन आई थिंक वी आर गुड टू गो। हमारी जो ग्लोबल स्टाइलिंग और ऑल एक स्टेज सेट हो चुकी है। मैं एक दफ़ा रिलोड कर लेता हूँ ताकि जो स्टाइलिंग है वो अपडेट हो जाए और हम इसको आसानी से कर सकें। अच्छा, ये आ गए हम हेडर में, और लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट। मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ टॉप बार का। और देन इसकी सेटिंग्स में जो फ्लैक्स आइटम्स हैं वो रो की तरफ जाएंगी, और इसमें आई थिंक दैट्स इनफ। और मैं दो कंटेनर इसमें मज़ीद ऐड कर देता हूँ। और इफ़ यू नोटिस दिस, जो हमने विड्थ बैकएंड के ऊपर ऐड की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो चुकी है। मैं जस्ट इसमें 30 पिक्सल राइट से दोनों तरफ से अप्लाई कर देता हूँ आज पैडिंग। और ऊपर से आई थिंक 15 इज गुड, एंड फॉर द बॉटम 70 इज फाइन, because because of the second container. So first of all for the right हम यूज़ करेंगे आइकन लिस्ट, और इसमें फ़ोन नंबर, और for the call I think this is fine। and then for the email हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे email, mail, envelope, envelope, I think this one is good। So yes, 30। और मैं एक डिवाइडर ऐड कर देता हूँ 50। okay, it's fine now। icon color is white। icon icon spacing I think it's fine। then we have white text and 16 pixels, and that's fine, that's good। so secondly we need social icons in the right side, और इसके लिए हमें अलाइन आइटम्स को एंड करना है। और इसमें हमारे पास एसवीजीज आइकन्स हैं, तो हम डायरेक्टली वही ऐड कर देंगे यहाँ पे। व्हाट्सएप, सो अलाइनमेंट राइट। और फॉर द ऑफिशियल कलर वी आर गोइंग टू ट्रांसपेरेंट बोथ ऑफ द कलर्स, तो ये ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएंगे।
और अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँ तो फिग्मा में हमें इनका साइज़ मिल जाएगा 28। तो 28 पिक्सल्स हमारे पास साइज़ आ चुका है, ज़ीरो पैडिंग। एंड फॉर द spacing I think 10 is fine, maybe. Okay, 10 is fine. uh, that's fine for the hover icons. mm, okay, that's fine. टॉप रो रेडी। हम एक और कंटेनर ऐड कर देते हैं और इसकी विड्थ हम रखेंगे 1340 पिक्सल, जैसे कि इसके। तो हम 1340 पिक्सल विड्थ, टॉप -55 पिक्सल, and I think -55 pixels from bottom for the hero section of। तो इस कंटेनर को हम ज़रा स्टाइल कर लें। तो वाइट बैकग्राउंड है हमारे पास और बॉर्डर आई थिंक हमारे पास नहीं है कोई। नो नो, आई थिंक हमें इसको स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं, हम इसमें एक कंटेनर और ऐड करेंगे एंड हमें उसको स्टाइल करने की ज़रूरत है। वो डिफ़ॉल्ट बिट्स देगा। अब मेनली हम जो मेन कंटेनर को इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1340 बिट्स लेगा, जो कि यहाँ पे आ गया। लेट्स से यहाँ पे एक और हिडन कंटेनर है जो कि 1340 बिट्स दे रहा है इनर कंटेनर को, और एक और कंटेनर जो कि 1240 बिट दे रहा है इनर कंटेंट के लिए। तो हम ये चीज़ इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे पास 1240 कंटेंट विड्थ आ रही है और ये डायरेक्शंस में जाएगा रो और स्पेस बिटवीन एंड लाइन आइटम सेंटर। एंड फॉर द स्टाइलिंग हम इसमें 15 पिक्सल्स, आई थिंक दैट्स फाइन। और बैकग्राउंड कलर हमारे पास वाइट आ जाएगा और बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल्स। ओके, आई थिंक हमें थोड़ा सा बॉर्डर बॉक्स शेडो भी ऐड कर लेना चाहिए। तो दैट्स फाइन। अब कंटेंट अंदर ऐड करें तो हमारे पास 3 कंटेनर्स आ जाएंगे, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइट लोगो ऐड करें, देन वर्डप्रेस मेन्यू, और इन द राइट विल प्लेस द बटन। तो हम 25% लेफ्ट और राइट में 25% ऐड कर देंगे, और सेंटर सेंटर जो मिडिल कंटेनर है वो 50% वेट ले रहा होगा। तो मैं जस्ट लोगों को स्टाइल कर दूं वेट वगैरह। तो 142 पिक्सल वेट ले रहा है ये, तो 142 पिक्सल। देन हमारे पास कंटेनर आई थिंक क्लिक है, नो, गेट अ कोड और फॉर आइकन हमारे पास यहाँ पे एक आइकन है जिसको हम अलाइन पोजीशन, ओके, 10 स्पेसिंग 10 पिक्सल। और फॉर द स्टाइलिंग आई थिंक हमें सिर्फ, नो नो,
स्टाइलिंग ठीक है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर में मसला आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। अलाइनमेंट, इनकी पोजीशन राइट, और दैट्स गुड, दैट्स गुड। और अगर मैं इसको आपको शो करवाऊँ तो ये हमारे पास लेआउट आ रहा है अभी के लिए। ओके, सो हमें सिर्फ थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है, बाकी हमारे पास लेआउट रेडी है। तो वर्डप्रेस मेन्यू इसलिए नहीं शो कर रहा क्योंकि हमारे पास कोई पीछे मेन्यू बना ही नहीं बैकएंड के ऊपर। तो मैं फटाफट से एक मेन्यू हम जल्दी से बना लेते हैं। मेन मेन्यू और पोजीशन लोकेशन हेडर में रख देते हैं, और इसमें होम पेज कुछ कस्टम लिंक्स में ऐड कर दें, जैसे कि सर्विसेज, हमारे पास अबाउट आ गया। देन आई थिंक हमारे पास और भी चीज़ें, ब्लॉग एंड कंटेंट आ गए। ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, so okay, this is good. So हम इसको अब डिज़ाइन करते हैं। आई थिंक हमारे पास मेन्यू के लिए जगह कुछ कम है, तो हम इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं फॉर बोथ साइड्स, और ये जगह जो है ना वो हम मेन्यू को दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अलाइनमेंट सेंटर फॉर द पॉइंटर हम कोई होवर के ऊपर अंडरलाइन नहीं चाह रहे, तो नन। और फॉर द मोबाइल ड्रॉप डाउन, अच्छा यहाँ पे एक और ट्विस्ट है जो कि मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। मैं जस्ट सेव करता हूँ, और यहाँ पे हम इसका मोबाइल व्यू देखते हैं कि हमारा मेन्यू किस तरह से नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो ये नीचे को कंटेनर को नीचे को धकेल रहा है, मतलब उसकी हाइट बढ़ा रहा है उस तरह से। लेकिन लेट्स से मैं यहाँ पे फुल वेट को क्लिक करता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब ये ठीक से काम करेगा, राइट। तो मैंने बहुत से वर्डप्रेस एप्लीकेंट्स को भी देखा है काफ़ी जॉब्स के ऊपर, और मैंने सेम मिस्टेक्स इस तरह से देखे हैं जो कि लोग बार बार कर रहे होते हैं। तो इसका आपने ध्यान रखना है। फुल विड्थ मोबाइल मोबाइल ड्रॉप डाउन में फुल विड्थ हमेशा आपने ऐड करनी है, साइड नहीं। आई वांट सेंटर, और टॉगल टॉगल जो बटन है हमेशा राइट की तरफ। तो इसमें हम टाइपोग्राफी में आ जाए 16 पिक्सल, आई थिंक 400, और दैट्स फाइन। देन एक्टिव भी ब्लैक, और आई थिंक दैट्स फाइन। फॉर ड्रॉप डाउन हमारे पास कोई ड्रॉप डाउन है तो नहीं, लेकिन हम जस्ट इसकी सेटिंग्स वगैरह कर देते हैं, राइट। और ओके, दैट्स फाइन। और टॉगल बटन की बात आए तो हम नेवी ब्लू टॉगल बटन, और बैकग्राउंड कलर हमारे पास ट्रांसपेरेंट आ जाएगा, क्योंकि वर्डप्रेस मेन्यू जो मॉड्यूल है मोबाइल के ऊपर एक लाइट सा बैकग्राउंड ऐड कर देता है टॉगल के ऊपर, टॉगल बटन के ऊपर। तो वो हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं विद दैट सेट 32 एंड 32 font size of the toggle button. I think that's fine. When it comes to responsiveness, तो अगर हम इसको
टैबलेट व्यू में देखें। हम्म, बिल्कुल ठीक। सो हमें इसको 70% चाहिए, इसको 30%। इट्स फाइन, इट्स फाइन। ओके, फॉर द फॉर द मोबाइल हम टॉप मेन्यू को टॉप बार को रिमूव कर देंगे, हाइड कर देंगे मोबाइल के लिए। और हम इसी को ही सेट कर रहे होंगे। इसमें टॉप एंड बॉटम बोथ मार्जिन, नेगेटिव मार्जिन विल बी डिस्पेयर। तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। विद दैट सेट, इसमें एक और भी चीज़ थी जो कि इनर मेन्यू को हमने बॉर्डर बॉक्स दिया हुआ। आई थिंक दैट्स फाइन, बट हमें बॉर्डर रेडियस को ज़ीरो करना है ताकि बुरा ना लगे मेन्यू के ऊपर। और हमें बटन को हाइड करना है फॉर मेन्यू। और वन लास्ट थिंग, फॉर द रैप आपको सेट करना है हम नोड ऐप। और 50% फॉर लेफ्ट कंटेनर एंड 50% फॉर द राइट कंटेनर। और मोबाइल में जो लोगो की विड्थ होगी आई थिंक वो तकरीबन 115। आई थिंक दैट विल बी फाइन। हम इसको जस्ट देख लेते हैं अभी सही। सो इट्स फाइन। आई थिंक टॉप और बॉटम से हमें मार्जिन को, पैडिंग को हटाना होगा। 10 ठीक रहेगी, 10 पिक्सल टॉप एंड बॉटम और 20 लेफ्ट एंड राइट फॉर द मोबाइल। तो ये अच्छी लगेगी। ओके, तो ये हमारे पास हेडर रेडी है। अब हम फुटर की तरफ जाएंगे। और फॉर द फुटर हम एक टेम्पल बनाते हैं फुटर की। और फुटर डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, फुटर की बात करें तो हमारे पास दो कंटेनर है बेसिकली इसमें। और एट द एंड हमारे पास कॉपीराइट टेक्स्ट आ रहा है, दो कंटेनर। फर्स्ट में हमारे पास लोगो विद सम आइकन बॉक्सेस। और नीचे हमारे पास चार कंटेनर्स हैं। नीचे वाले कंटेनर में हमारे पास चार मज़ीद कंटेनर्स हैं जो कि रो डायरेक्शंस की तरफ जा रहे होंगे। तो फटाफट से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंटेनर, कलर ब्लैक। और हमारे पास अगर आप इसमें देख रहे हो तो हमारे पास एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है फुटर के अंदर। तो बैकग्राउंड इमेज भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सेंटर, repeat no repeat, and display size cover, so it's fine। 30 from left and right, or 0 from bottom, and I think 80 pixel from top padding। I think so, it's fine। so दो कंटेनर हम ऐड कर रहे होंगे इसमें, बल्कि दो भी नहीं, तीन कंटेनर। एट द एंड हम कॉपीराइट वाला टेक्स्ट भी ऐड कर रहे होंगे। और इनर कंटेनर के अंदर जो गैप है that will be 50 pixels, 60 pixels, so 60 pixels और
फॉर फर्स्ट कंटेनर हमारे पास जो स्टाइलिंग है, बैकग्राउंड, देन 27 2020 27 और आई थिंक सो इट्स 16। हाँ, बॉर्डर रेडियस 16 है। 27 27। सो ओके, डिज़ाइन रेडी है। देन हमारे पास इसकी फ्लेक्स बॉक्स की बात करें तो आइटम्स रो की तरफ जाएंगी, और मैं फटाफट से दो कंटेनर हम इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, कंटेनर रिमूव एंड फॉर इमेज आएगी हमारे पास, जो कि लोगो लोगो फाइल आ गई। ओके, लोगो साइज 234, 234। और राइट साइड पे हमारे पास आइकन बॉक्सेस हैं। आइकन बॉक्सेस करके एक मॉड्यूल होता है एलिमेंटर के अंदर, आइकन बॉक्सेस। और दोनों आइकन बॉक्सेस के राइट में हमारे पास एक बॉर्डर है, तो उसके हवाले से भी, लेकिन आई थिंक हमें जो अलाइन आइटम्स है उसको सेंटर करना होगा ताकि सेंटर में आ जाए। और इसके विड्थ को 30% इज़ फाइन, और इसे 70%, ताकि ये जब रिस्पॉन्सिवनेस में जाए तो मसला ना हो। और इसको लेफ्ट साइड के ऊपर आइकन पोजीशनिंग, और फॉर द कंटेंट हम इसमें कंटेंट ऐड कर देते हैं, फ़ोन नंबर वगैरह। और यहाँ पे हमारे पास आइकन आ गया। दैट्स जो राइट साइड से हमारे पास 50 पिक्सल्स की स्पेस होनी चाहिए। 1 सेकेंड, अलाइन आइटम्स एंड 50 पिक्सल्स की स्पेस। और राइट बॉर्डर की बात करें तो हमारे पास जो बॉर्डर है वो सिर्फ राइट से आएगा 1 पिक्सल। और बॉर्डर की बात करें तो लाइट ग्रे बॉर्डर है हमारे पास 1 पिक्सल का, लाइट ग्रे बॉर्डर ऐड हो जाएगा। स्टाइलिंग की तरफ आए तो हमारे पास icon spacing, I think it would be 20, 0 for the, no, it's 10. Right, मैं आइकन का साइज देखूं तो हमारे पास 50 पिक्सल आइकन का साइज, फॉन्ट साइज। और टाइटल साइज इज 16, कलर वाइट, कंटेंट 16 पिक्सल, एंड कलर वाइट, आई थिंक। या ओके, तो अभी क्या ये कर रहा है? हम्म, बिल्कुल ठीक। ओके, हमारा ये सेट हो चुका है। दो आइटम्स राइट की तरफ जाएंगे, और ये जस्टिफाई कंटेंट एट द एंड,
और जो स्पेस है इसके अंदर आई थिंक दैट वुड बी 50, नो 60 आई थिंक, do you think? Maybe let's try this. सेकंड आइकन बॉक्सेस का हम कंटेंट चेंज करते हैं, email, then email address. Okay, I think it's fine. Yes. Okay. सेकंड कंटेनर की तरफ आए तो हमारे पास चार कंटेनर्स हैं जो कि रो की तरफ जाएंगे, तो डायरेक्शन जो फ्लेक्स बॉक्स की है वो रो, और स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम्स विल बी स्टार्ट। और फटाफट से हम चार कंटेनर्स ऐड करते हैं इसमें। और फॉर द फर्स्ट कंटेनर आई थिंक 45 इज 45%, 12% then 20%, then 15%. Mm, okay, I think so, that's fine. इसमें हमारे पास एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, और इसको हम कंटेंट ऐड कर दें। तो सबसे पहले हम हेडिंग लेंगे, हेडिंग H4 आई थिंक, H4 ऑटोमेटिकली स्टाइल ले लेगा जो कि हमने बैकएंड पे ग्लोबल स्टाइलिंग ऐड की हुई है। तो सिर्फ कलर चेंज, और फॉर द पैराग्राफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली 16 पिक्सल ले लेगा स्टाइलिंग जो बैकएंड के ऊपर ऐड है बॉडी टेक्स्ट की। और आई थिंक लाइट ग्रे कलर इज फाइन, लाइट ग्रे, यस। और इसकी एक विड्थ है जो कि है 384 पिक्सल, तो हम एग्जैक्टली 384 पिक्सल इस्तेमाल कर रहे होंगे यहाँ पे, 384 पिक्सल। सो for this container it will be added links, services, और follow, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे आइकॉन लिस्ट। आइकॉन रिमूव, और जल्दी से इसको हम ऐड कर देते हैं, कॉन्टेक्ट और ब्लॉग, ठीक। spacing is 15, I think that will be fine, light gray color scheme, 16 pixels. Hmm, okay, copy, paste, जल्दी से मैं यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर दूँ।
आई थिंक लाइट कलर, लाइट ग्रे कलर हमारा, हाँ लाइट ग्रे कलर क्यों नहीं सही लग रहा हमारा। ओहो, लाइट ग्रे कलर हमने ठीक ऐड ही नहीं किया हुआ। बैकएंड पे लाइट ग्रे कलर ठीक ऐड नहीं है। तो लाइट ग्रे, या तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जहाँ जहाँ पे भी हमने लाइट ग्रे कलर यूज़ किया हुआ है ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो आप देख सकते हैं। सो हमने हेडर में आइकन बॉक्सेस ऐड किए थे, तो वहाँ से ही हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे फुटर पे, और हमारा फुटर रेडी ऑलमोस्ट। देन हम कॉपीराइट टेक्स्ट ऐड करेंगे और हेडर फुटर रेडी, और देन हम पेज के ऊपर फोकस कर सकेंगे। तो कॉपी पेस्ट, alignment, alignment left, and that's it. Hmm, that's fine. This uh, we have the last thing, that is paragraph. So for the paragraph, where the copyright text. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि एलिमेंटर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर पैराग्राफ एलिमेंटर ऑटोमेटिकली पैडिंग एक छोटी सी ऐड कर देता है, आई थिंक 15 पिक्सल की पैडिंग। अगर आप देखें तो लेट्स से मैं इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ, और मैं इसमें 10 पिक्सल, 12 पिक्सल ऐड कर देता हूँ। और फॉर द टॉप बॉर्डर मैं इसमें एक क्योंकि हमारे डिज़ाइन में टॉप बॉर्डर है, तो हम इसमें लेट्स से ये ऐड कर देंगे। ठीक है, तो थिंक सो इट विल वर्क। ओके, दैट्स फाइन। बट मैंने टॉप एंड बॉटम दोनों से एग्जैक्टली सेम पैडिंग ऐड की है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्क आ रहा है। उसकी वजह ये है कि एलिमेंटर ऑटोमेटिकली पैराग्राफ पैराग्राफ में एक पैडिंग ऐड कर देता है, और जो कि हैंडल की जा सकती है उसमें। let me just show you a small intro. लेट्स से यहाँ पे ना मैं कुछ पैराग्राफ्स बनाता हूँ, और मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। मैं सिर्फ आपको वजह बताने लगा हूँ कि एलिमेंटर ऑटोमेटिकली ये बिलो पैडिंग क्यों आती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पैराग्राफ स्पेसिंग का, अगर मैं इसको ज़ीरो करूँ तो आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ के दरमियान जो पैडिंग थी वो रिमूव हो चुकी है। ऑटोमेटिकली जो हमारे कॉपीराइट टेक्स्ट के टेक्स्ट में बॉटम पे पैडिंग थी वो भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुकी है। तो ये अभी बुरा लग रहा है। लेट्स से पैडिंग ऐड हुई, मतलब पैराग्राफ जैसे ही पैराग्राफ खत्म होता है ऑटोमेटिकली पैडिंग ऐड होती है, तो ये आई थिंक मसला करता है। मैं इसको हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ऐसे ही, और फॉर फॉर द कॉपीराइट टेक्स्ट हम नेगेटिव मार्जिन दे लेंगे, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाए। तो लेट मी जस्ट शो यू, let me just clean it up and show you. Okay,
सो हमारे पास ये चीज़ आ गई। कॉपीराइट आइकन इज कॉपीराइट आइकन बदलना है। आइकॉन ओके, हमारा फुटर रेडी है। व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिवनेस, तो हम रिस्पॉन्सिवनेस पे इसमें काम करेंगे। अभी के लिए अभी के लिए for this, let's say 25%, 20%, I think that's fine, और 20% ये हमारे पास 80% हो जाएगा, और इनमें जो गैप है वो 20, then icon box is padding also 20, और जो आइकन का साइज है वो 40। I think that will be great. Okay, and for the mobile हमें इसको कुछ इस तरह से सेट करना है कि लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 30 और 30 पैडिंग दी हुई है फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हम इसको 20 पिक्सल कर देंगे। और मोबाइल टॉप 60 पिक्सल इज फाइन, और 200, देन आई थिंक इनको भी सेंटर करने की ज़रूरत है, इसे भी सेंटर, और पैडिंग राइट इसको ज़ीरो कर दें, or icon spacing will be 5, I think 10 is fine, और जो inner gap है will be 30, 35, और एक और चीज़ जो कि हमने रिमूव करने हैं वो border, for the mobile it will be 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, और this is fine for the rest I think that's all fine। ओके, तो हमारे पास फुटर हेडर फुटर रेडी है, और हम अब डायरेक्टली जाते हैं अपना होम पेज स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट होम पेज डिस्प्ले एज अ होम पेज, और लेट्स सी व्हाट्स शोइंग। ओके, so we need to add the z index। It's fine, it's fine। ओके, तो हमारे पास हेडर फुटर रेडी हो चुका, और अब हम अपना होम पेज बनाना स्टार्ट करेंगे।
तो इस होम पेज के लिए हम जल्दी से एडिट विद एलिमेंटर और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। डोंट नीड दिस। ओके। तो होम पेज में सबसे पहले हमारे पास ट्रस्टेड रिव्यूज़ हैं। उनकी एक एसेट लगा हुआ है एज ए इमेज। देन हमारे पास टाइटल है और पैराग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक इमेज चाहिए। देन हेडिंग, देन टेक्स्ट एडिटर। दैट्स फाइन। सो देन इमेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास हेडिंग का कंटेंट आ गया। यहाँ पे पैराग्राफ आ गया। ये हमारे पास H1 है और ऑटोमेटिकली ये बैकएंड से स्टाइलिंग कैच कर रहा है। तो स्टाइलिंग की तरफ आएँ तो हमारे पास ये ग्रुप है जिसकी विड्थ है 503। तो 503, then we have, okay, this need to be white and 16 pixels. Okay, it's, this is white too. Then we need to do some settings, like first of all 30 pixels from both sides padding, और ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए। और मोबाइल हम इसको 20 पिक्सल कर देंगे और from top and bottom 80 pixels from top and bottom. I think that will be great. Align items, justify content end होगा ताकि हम इसको अच्छे से कर पाएँ। Okay, I think that's not the case. Hmm, I think so. It's fine. Maybe 350. Okay, it's fine now. So for second section, we need to add, okay, the row, the text direction will be row or space between, and the gap between will be, I think that's fine. It's a default 20. और padding की बात करें तो again 30 from both sides, 80 pixel, 80 pixel top and bottom,
और हम इसमें दो कंटेनर ऐड करेंगे विद दैट सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक आइकन के साथ टेक्स्ट है और हेडिंग पैराग्राफ एंड बटन, और राइट साइड में हमारे पास इमेज है, तो यहाँ पे इमेज आ जाएगी। उसके बाद फॉर आइकन बॉक्स आई थिंक हमें आइकन लिस्ट यूज़ कर लेना चाहिए। तो टेक्स्ट अपर केस में, और अगर फॉन्ट साइज की बात की जाए 16, ओके दैट्स फाइन। 20 पिक्सल आइकॉन, then there will be a heading h2, और हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। देन आई थिंक फॉन्ट साइज पे काम करने की ज़रूरत है। देन हमारे पास टेक्स्ट एडिटर, जिसमें पैराग्राफ आ गया, और हमारे पास एट द एंड एक बटन आ जाएगा। आई थिंक बटन हमें कॉपी कर लेना चाहिए फ्रॉम हेडर। So here it uh, here it is. Learn more. And when it comes to image, तो image हमारे पास यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास जो लेफ्ट कंटेनर है, उसका उसका टेक्स्ट जो भी कंटेंट है वो सेंटर में है, तो हमें लेफ्ट कंटेनर सेलेक्ट करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये यहाँ से फिक्स हो जाएगा। आई थिंक दैट्स फाइन, राइट। इट्स नॉट 48 पिक्सल। Okay, it's fine, it's fine. Then we have next section with the services। तो हम फटाफट से कंटेनर ऐड करते हैं जिसमें मज़ीद दो कंटेनर होंगे। टॉप फॉर हेडिंग, वाइट एक्सेंट, बैकग्राउंड कलर इज वाइट एक्सेंट। और व्हेन इट कम्स टू पैडिंग, पैडिंग हमारे पास अगेन, अच्छा पैडिंग हमेशा बोथ फ्रॉम टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से आपने सेम रखनी है फॉर ईच सेक्शन, ताकि एक हायरार्की बिल्ड हो और डिज़ाइन कंसिस्टेंट रहे। तो उसके लिए हम ओके, एंड इनर गैप 45, दैट्स फाइन।
सर्विसेज, देन हमारे पास सर्विसेज के टाइप की हेडिंग आ गई। और उसके बाद हमारे पास आई थिंक हमने बिल्कुल ठीक। सो हम अपनी सर्विसेज ऐड करते हैं। हमारे पास बेसिकली हमारे पास कंटेनर्स हैं ये, जिसमें बैकग्राउंड कलर हमारे सर्विसेज की लेट्स से फीचर्ड इमेज है, और उसके बाद हेडिंग है, और आई थिंक एक आइकन है जिसमें हम ओके दैट्स फाइन। तो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सेटिंग कर लेते हैं। रो फ्लेक्स आइटम्स रो की तरफ जाएंगी, और फ्लेक्स आई थिंक दे विल बी सेंटर, यस, एंड गैप 15 पिक्सल, एंड वो ऐप कर रही होंगी। तो ओके, अलाइन कंटेंट ऑन टॉप, तो हम एक कंटेनर ऐड करेंगे। आई थिंक 3 containers for the first of all 32 pixel, main width हमारे पास 400, that's fine। और बैकग्राउंड इमेज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, position will be center, no repeat, and display size cover, so it's fine। Border radius I think 8 pixels, let's see, I think so it's 8 pixels, no, 16 maybe, yes। So we have now a heading and an icon. I think we can use icon box here, maybe. Let's see if we can use icon box here. Let's say this is the title heading. We can set the title heading tag here. So हम content add कर देते हैं, and for this let's just download this SVG file, and here it is. So after doing this, yes, okay, 25, and from top to bottom I think it will be 35 and 30, 30, 30 will be good. And a line item justify content will be end, at the end. Mm, okay,
I think we have the heading of H3 32 पिक्सल. ओके, हमारे पास हेडिंग टैग बिल्कुल ठीक है. और heading tag color is white. Then we have 400 white. आइकन की विड्थ की बात की जाए तो हमारे पास 50 आइकन विड्थ है, 50 पिक्सल. And it's white. Okay, okay. So let's move to the other. Just copy that, and I think we need to add some 450. Okay, height is 500. 500 height, 500 height. So it's fine now. हम इसे कोई डुप्लीकेट करेंगे ताकि हम अब कंटेंट बदलें और ये हमारे पास लेआउट सारा रेडी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेकंड सर्विसेज कंटेंट एंड अपलोडिंग.
तो गाइस हमारे पास सारा कंटेंट अपडेट हो चुका है और लेट्स टेक अ लुक एट दिस एंड इट्स टोटली फाइन. Let's dive into another section which is progress. So whatever say container or we have a background image for this container or okay, we need to, that's the one container that we need here. And one other container we need, and let's say, let's delete this, and we need to style this padding 30-30, from top and bottom 80 pixels, and background will be black, and background image will be here. Position center, no repeat, and it's covered. Okay, it's fine. So next is need to change that. And here comes the progress process, and यहाँ पे white color आ गया. So it's totally fine. For inner gap 45 pixel is fine. और नीचे कंटेनर में हमारे पास दो मज़ीद कंटेनर है, लेफ़्ट एंड राइट, और इसमें हम कंटेंट ऐड करते हैं जिसमें सेटिंग्स में आए मेन कंटेनर की तो फ्लैक्स आइटम रो की तरफ जाएंगी, स्पेस बिटवीन, एंड ओके, दैट्स फाइन. वन थिंग आई थिंक इट विल बी 35 pixel from gap from the both containers. तो हम यहाँ पे दो कंटेनर ऐड करते हैं. आई थिंक हमने ओके, here comes the image, and यहाँ पे हमारे पास कुछ आइकन बॉक्सेस हैं. बिल्कुल आइकन बॉक्सेस हैं हमारे पास, और हर आइकन बॉक्सेस के बॉटम पे हमारे पास एक बॉर्डर है. तो आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट दिस आइकन बॉक्सेस. एसवीजी फाइल्स हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे आइकन.
Okay, first of all, here comes the sample 80 pixel. Okay, it's fine. We have the blue icon, width 80 pixel, और कंटेंट की बात की जाए तो वाइट देन 400 पिक्सल 400 I think I need to work on line height 20. Okay, that's fine. Or light gray 16. Okay, it's all good. So for bottom padding you need to have 20 pixel bottom. हम यहाँ पे एक बॉर्डर ऐड करेंगे 1 पिक्सल बॉर्डर और जो कि लाइट white accent. I think that will be fine. Yeah. Border color is this. So need to duplicate all that. Let's update the content for the other three as well. Icon selected, and let's take a look at this. So it's fine. It's totally fine. I think we need to increase some gap, like 25. Okay, and justify content will be centered. तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा जिस तरह के ये हमारे पास सेंटर में आ गया. ओके, we need to increase some more gap like 45. Okay, so let's dive into next. We have exact same container that we built on top, so let's just copy and paste it here. और
Here comes why choosers. I choose all. Then we have icon list. तो आइकन लिस्ट की बात की जाए तो हमारे पास we need to set the uppercase as default. Icon will be middle, no, like top, and maybe let's update the content, and we're good to go to the next section. Okay, need to update the image, and here it is. Okay, looks good. Let's dive into another. Next, uh, we have something like a top container, and bottom container will be bottom container will have uh, two containers, left and right. और यहाँ पे हमारे पास एक carousel है, like testimonial carousel. तो स्टार्ट करना चाहिए हमें. इसमें मेनली हमारे पास. Okay, I think we need to copy this. Paste it here. हमें कलरिंग वगैरह अपडेट करनी होगी, जैसे ही हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज अपडेट करेंगे तो एग्जैक्टली हर चीज़ चेंज हो चुकी होगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कलरिंग में आए तो हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर है. और ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज. नो रिपीट कवर एंड will be navy blue.
header color will be black, and हमारे पास यहाँ पे एक इमेज आ जाती है, दिस वन। और उसकी बात की जाए तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे कैरोसेल है। तो कैरोसेल बनाने के लिए एलिमेंटर का कैरोसेल मॉड्यूल बहुत अच्छा है। उसके लिए हम कैरोसेल, अच्छा, ये कैरोसेल मॉड्यूल एलिमेंटर प्रो के अंदर आता है। ये आप देख लें, क्योंकि एलिमेंटर प्रो हम लूप कैरोसेल भी आई थिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अगर थर्ड पार्टी प्लगइन्स हमें मिल जाएं तो ठीक है, लेकिन मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। और रिकमेंड भी इसी को ही करते हैं कि मज़ीद प्लगइन इस्तेमाल करने की बजाय एलिमेंटर पेज बिल्डर का ही वो वर्जन आप इस्तेमाल करें, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है हमें। तो लेट्स डाइव इनटू इट। Display will be one, scroll will be one, and let's build this. So first of all, padding की बात की जाए तो padding बिल्कुल ज़ीरो कर दें, border radius nothing, then icons will be nothing, okay, I don't want the arrows because that's not in the design. तो हमें एक पैटिनेशन चाहिए जो कि डॉट्स वगैरह हैं हमारे पास, और डॉट्स की पोजीशन को सिर्फ हम राइट की तरफ कर देंगे। तो उसके लिए हमें कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये डिज़ाइन बना लें यहाँ पे, और देन हम क्या कर सकते हैं कि एक हम इसमें इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो मज़ीद डॉट्स वगैरह हैं या फिर कुछ और चीज़ हुई। तो हमें यहाँ पे दो कंटेनर्स चाहिए, जो कि आइकन बॉक्सेस, यहाँ पे एक आइकन आएगा, और देन यहाँ पे स्टार रेटिंग और पैराग्राफ। तो जस्ट टेक टू कंटेनर्स, दो कंटेनर्स आ गए हमारे पास। टॉप कंटेनर flex item will be low or space between, and both will be top. So यहाँ से कंटेंट अपडेट करते हैं। आई थिंक हमें आइकन बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, हमें वीडियो बॉक्स की ज़रूरत है, इमेज बॉक्स। We have this image, and let's design this.
font weight will be 400 and line height will be okay, it's fine। और हमारे पास एक आइकॉन है यहाँ पे राइट साइड में। ओके, so first section ready, first container ready, then move into next container। तो हमारे पास टॉप पे 1 पिक्सल पैडिंग है इस कंटेनर में, 1 पिक्सल बॉर्डर है, सॉरी। और रेटिंग रेटिंग कलर विल बी नेवी ब्लू। दैट्स फाइन। पैराग्राफ की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है। साइज विल बी 24। I think that's fine. That's fine. 20 will be 20 look good. So we need to add some space here and 20 pixel from here, and looks fine now. So हम बाकी दोनों स्लाइड्स रिमूव कर देंगे और इसी को 2 दफ़ा और ये चेंज, और हमारे पास डिज़ाइन रेडी हो चुके हैं। और when it comes to dots, तो आई थिंक डॉट पे काम करने की हमें ज़रूरत है नेविगेशन में। तो इसके लिए हमें कस्टम कोड थोड़ा सा CSS का लिखना होगा।
let's take a look at front end. That's fine. That's fine. Let's see अगर space between, I think 2 pixel space will be fine. और साइज की बात की जाए तो हमारे पास 9 पिक्सल हाइट है, तो इट मीन्स कि 9 पिक्सल हमें साइज रखना चाहिए। ठीक। और custom positions, okay, it will be at the end. Mhm. Okay, so it's fine then. हमारे पास ग्रे है। Okay, all good. Hmm. 20 pixel, that's fine. I think 30 will be fine. And border radius will be 4 pixels. Wow. Okay, so I'm going to add custom CSS in the sections, custom CSS selector, and this, and we're good to go. So basically, we set the width of that the navigation, you know, and it looks fine. So let's dive into next section. We have this beautiful section here, and again we have, I think we can copy this section again and add the key section and then last section here. So let's complete this quickly. Okay, let's update the content.
आई थिंक हमें 5 पिक्सल का गैप ऐड कर देना चाहिए. Maximum margin will be 15 pixels. 5 pixels. Okay, all updated. And for this, हमने एक्चुअली लाइन हाइट को बिल्कुल ही कम कर दिया हुआ है ताकि हमारी अलाइनमेंट ठीक हो जाए. तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं. H4 है हमारे पास. तो हम जाते हैं एच सेलेक्टर के H4 के अंदर, H4 में, और मार्जिन टॉप माइनस में दे देते हैं. -10 पिक्सल. और 10 will be fine. Oh, so it's automatically getting the margin. Let's say I just add -1 pixel, it will automatically set to 0. I think I should say 0. So it will automatically set it to 0. So that's fine. That's totally fine. And let me just copy and paste the styling here. So one more thing, we need to add the content spacing here. That will be fine. Okay, I placed the styling and all those things in the wrong place. Just use that. Okay, that's fine. So now for this section, we need to remove all the styling and again duplicate one more time, and image will be at center. Let me just select the image that we have. And okay, so from both sides it will be 40/40. No, it will be 30%, 30%, and the center will be 40. I think that will be great. Hmm. So we have some containers here. First of all, I'll take one container, and in that, first of all, content center, and in that container, let me just get this first. WordPress.
And for the icon, let's just download this quickly. And we have a counter module here. Let's with this 5000 suffix will be plus, and it's 64 pixel. Title tag will be span. That's correct. I think that's the, because it will automatically take the body text styling. तो हम एग्जैक्टली क्या कहते हैं यहाँ पे नंबर 10 स्टाइलिंग की बात करें तो कलर वाइट 64 pixels, and for the title color white and 16 pixels. Okay, it's fine, and हमें सिर्फ इसको डुप्लीकेट करना है. आई थिंक एक चीज़ और रहती है जो कि हमारे पास एक बॉर्डर है एट द बॉटम, ग्रे 1 पिक्सल बॉर्डर है, और इसमें फटाफट से बॉर्डर ऐड करते हैं और डुप्लीकेट करना है. Secondly, let's update the content. 98%. Save this. We need to have 1 pixel from bottom, 1 pixel from bottom. So that's totally fine.
Let's dive into another container. I think हमें सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करने की ज़रूरत है और remove this. Let's update the content first और then हम इसको थोड़ा सा adjust कर लेंगे क्योंकि adjustment की थोड़ी ज़रूरत है यहाँ पे 2000 plus 1000 separator. Okay, we need that. Okay, let's do some adjustments. I think that will be 28, again 28. Hmm, yeah, that's totally fine. तो एक दफ़ा फ्रंट एंड ऊपर चेक कर लें कि ठीक नज़र आ रहा है। आई थिंक बिल्कुल ठीक है, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें बॉटम पे पैडिंग नहीं आएगी ताकि हमारी इमेज नीचे को चली जाए। और हाँ, बाकी चीज़ें ठीक है। एंड देन लास्ट कंटेनर लास्ट कंटेनर विल बी एग्जैक्टली द सेम। हम ये कंटेनर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। लेट्स अपडेट द कॉन्टेक्ट कंटेंट। और फॉर्म के लिए हमारे पास एलिमेंटर के अंदर एक फॉर्म मॉड्यूल होता है जो कि बिल्ड इन फॉर्म हमें देता है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा हुआ है अपने स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन के अंदर और जॉब एप्लीकेंट्स में। तो उसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी प्रायोरिटी देते हैं कि थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल किया जाए, जैसे कि डब्ल्यू बी फॉर्म्स हो गया, मेट फॉर्म हो गया या फिर कॉन्टैक्ट अस 7। तो बजाय इसके कि ये इस्तेमाल करें वो, तो आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप जो थर्ड पार्ट ओल्ड प्लगइन इंस्टॉल करने के बजाय जो एलिमेंटर का बिल्ड इन है वो यूज़ करें क्योंकि टोटली फ्लेक्सिबल है। नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म आई थिंक लेबल नहीं चाहिए हमें। देन फॉर्म नंबर height will be okay. We have tell placeholder.
50 pixels. Then we have email address, 50% width, और हमारे पास देन आ जाता है select। तो यहाँ से select fields आपने ऐड कर दी, और it's required, then interested in, okay, so 50 pixels। interested in हमें सिर्फ सर्विसेज ऐड करनी है कि किस सर्विस में वो इंटरेस्टेड है। तो यूज़र फॉर्म फिल करेगा, तो सारी सर्विस हम ऐड कर देंगे ताकि वाइल रीच आउट यहाँ से वो सर्विस सेलेक्ट करें और क्लाइंट को कोड रिसीव हो जाए। तो एग्जैक्टली मैसेज, देन हमारे पास सेंड, और सेंड के लिए हमारे पास एक सेंड बटन के लिए हमारे पास आइकन भी है विथ 15 पिक्सल स्पेसिंग। और अगर इसको स्टाइलिंग की बात की जाए तो ऑल गुड। फील्ड्स में हमारे पास टेक्स्ट आ गया, बैकग्राउंड कलर विल बी वाइट एक्सेंट, ओके। और आई थिंक बॉर्डर भी हमारे पास कुछ गलत दिखा रहा है, तो हमारे पास टाइप ग्रे बॉर्डर। बटन्स की बात की जाए तो बैकग्राउंड कलर विल बी नेवी ब्लू, यस। बटन की हाइट थोड़ी ज़्यादा करेंगे, और ये हमारा फॉर्म रेडी है। सो फॉर डेस्कटॉप साइट रेडी हो चुकी है, और लेट्स टेक अ लुक एट द रिस्पॉन्सिवनेस। और होम पेज की रिस्पॉन्सिवनेस हम सेट करते हैं, और टैबलेट के लिए आई थिंक हर चीज़ बिल्कुल ठीक ही रहेगी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेट्स से 48 pixels, then we have again 48 pixels for tablet, तो ये सेट हो जाएगा। अगेन
48 पिक्सल, 48%, 48% ये विड्थ रहेगा ऑन मोबाइल, ताकि सिर्फ दो कॉलम शो हों टैबलेट के अंदर। और मोबाइल में हम एग्जैक्टली इसको वन कॉलम कर देंगे, 100% विड्थ देके। तो ये चीज़ हम करने जा रहे हैं। ओके, सो दैट्स फाइन, ऑल फाइन। ओके, यहाँ पे अगेन हमें ट्राई टू डिस्प्ले वन सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली वो वन के ऊपर सेट हो जाएगा। और देन वी हैव दिस, इट्स फाइन। ओके, एंड इट्स ऑल फाइन। देन फॉर मोबाइल, तो मोबाइल के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो हमने लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड से पैडिंग, और बॉटम से 60, और टॉप से भी 60 आई थिंक। यस, दैट्स फाइन। ओके, और आप ये देखें कि हमने जो स्टार्ट में हमने ग्लोबल स्टाइलिंग ऐड की थी एलिमेंटर की सेटिंग्स के अंदर, ग्लोबल फॉन्ट्स और टाइपोग्राफी ऐड की थी। आप ये देखें कि जैसे ही ये टैबलेट में 64 पिक्सल्स दिखा रहा है, और जैसे ही मोबाइल के ऊपर आया ऑटोमेटिकली ये फिक्स हो गया, और 38 पिक्सल्स जो कि हमने बैक एंड के ऊपर सेट की थी वो शो करवा रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा रिस्पॉन्सिव हो चुका है। देन हमारे पास ये आ गया, और हमें सिर्फ कंटेनर आई थिंक सेट करने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। तो 60 पिक्सल पैडिंग वगैरह, और मे बी गैप विल बी 30 पिक्सल, 40 will be fine. Then again 20 from both left and right, and 60 top and bottom। और हमारे पास इस दफ़ा 100 पिक्सल ऑलरेडी आ रहा है, तो दैट्स फाइन। बट हमें जो हाइट है वो 400 कर देनी चाहिए। तो ये 400, हमारा आइकन बॉक्स का ज़रा लेआउट भी चेंज हो चुका है, तो इसको भी डेफिनेटली हमें फिक्स करना है। सो फॉर आइकन बॉक्सेस, okay, it's all set. Then container padding,
60 from bottom and bottom. Wow. But maybe we can reverse the column. We have first content and then we have image at the end. Yes, so that's fine. Again, we'll be padding sector and gap will be 40. Okay, again padding. Okay, we need to reverse the direction so that our reviews will come first and then the image. I think हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है. Let's say um, hmm, so we need to work on this. Let's say हमारे पास मोबाइल में किस तरह से शो हो रहा है एक्चुअल डिवाइस में. ओके, display flags. Yes, that's fine. और ये कोड हम सिर्फ ऐड कर रहे होंगे. ये कोड हम सिर्फ ऐड कर रहे होंगे फॉर मीडिया. अच्छा, ये कोड हम सिर्फ ऐड कर रहे होंगे और ये कोड हम सिर्फ ऐड कर रहे होंगे फॉर मीडिया, फॉर मोबाइल. मीडिया लाइब्रेरी यहाँ पे लगेगी. कस्टम कोड इसमें सिंपली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैक्स विड्थ जब 767 हो जाए, जो कि एलिमेंटर का ब्रेक पॉइंट है मोबाइल का, तो ये अप्लाई हो जाए. तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टर के अंदर, मतलब इस कैरोसेल में जितने भी इस क्लास के इमेज बॉक्सेस के रैपर हैं वो डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाएंगे. तो हमारे पास सिर्फ ये इस तरह के जितने भी इमेज बॉक्सेस हैं वो हैं, ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाएंगे. सो डेफिनेटली देन हमारे पास आई थिंक हमें
इसके अलाइनमेंट को भी सेंटर करने की ज़रूरत है। तो फॉर मोबाइल सेंटर हो जाए, और अगेन कंटेनर पैडिंग यहाँ पे आएगी, लेट्स से 620, सॉरी 60, 60। Okay, so all good. Then we have last section, like to- so it's all fixed, and let's take a look at front end. हमने पूरा होम पेज बना दिया, जो कि एक सो इट्स ऑल फिक्स्ड। सो हमने पूरा होम पेज बना दिया, जो कि एक फिग्मा डिज़ाइन से एलिमेंटर में कन्वर्ट किया गया है। तो इसमें हमारे पास हेडर है सबसे पहले, देन ऑल द थिंग्स। आई थिंक इट लुक्स ग्रेट, ऑल द सर्विसेज आर हियर, और this is called pixel perfect design, and you can see that. So guys, thank you so much for watching this video, and I'll catch you in the next one.